Now our question is write a program to overload the function area to display. तो ये display की जगह पे just here I am making the change to return. Again pay attention. Write a program to overload the function area to return करना to return the area of square, area of rectangle and area of circle. ठीक है, मीन्स अभी तक जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईच एंड एवरी फंक्शन में लिखा था बिकॉज इट इज गोइंग टू डिस्प्लेड. ओके, बट हियर कीवर्ड इज मेंशन्ड दैट इज रिटर्न. मीन्स मेरा फंक्शन रिटर्न करना चाहिए. तो मीन्स पहले वाला जो प्रोग्राम बनाया था वो विदाउट रिटर्न और विद पैरामीटर बनाया था. नाउ दिस टाइम आई हैव टू मेक द प्रोग्राम विद रिटर्न, बट यहाँ पे विद रिटर्न. वॉइड की जगह पे मुझे रिटर्न टाइप लगाना पड़ेगा विद पैरामीटर. ओके, see the difference between the question. If it is mentioned to display, it means system dot out dot you have to write down in each and every function. Okay, means function is not going to return the value. But if it is mentioned in the program to return the value, it means you cannot write the void keyword here, even the system dot out dot println also. Okay, so how we'll make the program of this type? First of all, defining the class, then public void area. Void nahi likhenge. Then area int s, and here return. क्या रिटर्न कराएंगे? s मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर. ये एरिया ऑफ द स्क्वायर था ना, तो रिटर्न s मल्टीप्लाई बाय s. अब देखो यहाँ पर here you have mentioned integer data type int s. When you are going to perform the multiplication of the s, इंटीजर की वैल्यू, तो रिटर्न टाइप भी आंसर किस में आएगा? इंटीजर में. when you are going to multiplication, when you are going to do the multiplication or the calculation of the integer value, so obviously result also going to be in the integer only. so यहाँ पर जो रिटर्न टाइप लिखेंगे हम, void के जगह पर void नहीं लिखेंगे because void is no return type, but we have to mention the return type. so which type of the value is going to be returned, ये यहाँ से समझ में आता है. s और s इंटीजर के ही होंगे, इंटीजर की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर की वैल्यू रिटर्न होगी. तो दैट्स व्हाई पब्लिक इंट एरिया, बस ये चेंज करना है. ठीक है, नाउ इन दिस ये देखो यहाँ पर l इंटू बी, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके रिटर्न करवा देंगे. दैट्स इट ओनली. और void की जगह पर at the place of the void you are going to mention int. same here, area. now r multiply by r with the pi, और यहाँ पे है डबल r. तो अब बताओ कौन सा डेटा टाइप होगा? टेल मी. डबल. obviously because now it is the value of the double. पॉइंट की वैल्यू है ना, तो दैट्स व्हाई रिटर्न टाइप आल्सो विल बी डबल. तो ये डबल हो गया. अब ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई. नाउ द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. ठीक है, कॉलिंग में कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम. देन अभी देखो यहाँ पे पैरामीटर आ गया. ठीक है, बट दीज फंक्शन, ऑल दीज फंक्शन गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू. यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू, और यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू. राइट, इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की वैल्यू, एंड हियर इट इज डबल टाइप ऑफ द वैल्यू. तो मीन्स जब ये फंक्शन रिटर्न करेंगे तो हियर आई हैव टू डिक्लेयर लाइक इन स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का एरिया, और यहाँ पे इंट रेक्टेंगल का एरिया. यहाँ पर अच्छा ये रेक्टेंगल का नहीं है, देखो मैंने पैरामीटर पास किया फंक्शन 3 के लिए, ये सर्कल. ठीक है, और ये यहाँ पर, और ये डबल का होना चाहिए because this third function is going to return the value of double type, and here it is in rectangle.
in rectangle equals to, ऐसे करके हम कॉलिंग करेंगे. नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट कहाँ है और सिस्टम डॉट आउट में क्या प्रिंट कराएंगे. सिस्टम डॉट आउट में हम कराएंगे एरिया इज. अब एरिया जिसका भी होगा, अब एक स्क्वायर का है तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर ये रहा. ये जो भी रिटर्न करेगा फंक्शन वो स्क्वायर में है और ये यहाँ पर हम इसको डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज. स्क्वायर को कॉल कर लिया. ठीक है. देन आई हैव टू डिस्प्ले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आल्सो. सो हियर आई विल राइट system.out.println area of rectangle. Okay, then the variable is rect. Then system.out.println area of circle. So area is circle. तो वेरिएबल कौन सा था सर्कल का, सर्कल, राइट. इस तरीके से हम कर सकते हैं. दिस इज द वन वे. Then the second way also there. Let me execute it first. Is here how we are calling the function. This function is belongs to with return or with parameters. देखो with return and with parameters. तो ये return ऐसे कॉल कर. Now one more way as we have done in the when we were doing the without return or with return. तब ये देखो, this is the first thing कि ऐसे आप बना सकते हो. I'm giving this in the chat box. And another thing also that you can call the function directly. You can call the function directly in the system.out.println. In the chat box, I'm giving this same one. Now, how you will call it directly? Instead of making this, here I'm commenting, means no need to declare extra variable. Directly, you are going to call the function in the system.out.println like obj area 5. ये देखो यहाँ पर, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाना. बट ये तभी होगा जबकि ये फंक्शन रिटर्न टाइप वाला होगा. मीन्स व्हेन द फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, देन ओनली यू कैन कॉल द फंक्शन इन द system.out.println. विदाउट रिटर्न वाले फंक्शन को हम system.out. के अंदर इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट कॉल दैट फंक्शन. And here it is circle. Now it's up to you कि which method of the calling you are going to use. वो वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, but it is shorter one. इसमें आपको ये भी ध्यान नहीं रखना कि कौन से टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है. Directly in the system.out.println you have to call this function. This calling is done. Same output you are going to get. Square, rectangle and circle. So that way is also perfect and the correct one. That is also I'm giving in the chat box with the question. Means what is the difference? पहले वाला जो without return value है, again I'm explaining it. Without return, so in the without return, at the place of the return type, at the place of the data type, here we are writing void. Okay, and at the place of the return statement, here we are doing system.out.println, right? But if the question is coming to return, see, it is mentioned. If it is a mention in the overloading program, then you have to use the return. If it is not mentioned, then you can use any both of the type.
By written you can use, or without written you can use. It's up to you. Whatever you feel more comfortable, you can use that. But as it is mentioned in the question, key function area to return the area of the square, means this function is going to return the area of the square, rectangle and the area of the सर्कल. तो कैसे रिटर्न करवाया? रिटर्न s मल्टीप्लाई बाय s, रिटर्न l मल्टीप्लाई बाय b एंड रिटर्न pi r square. But you have to आउटपुट क्या है? wait, but you have to write data type. This is return type over here, right? Clear? Now